Hi guys, this is the first video of tutorial series Make a Puzzle Platformer Game. So हम बनाने जा रहे हैं ये गेम। ये मैंने एक गेम जैम के लिए बनाया था and I think it's going to be perfect for beginners. ये series cover करेगा most of the basic stuff like how inputs work, the physics system in Unity, etc. etc. It should get you started and I think it's simple game but will be really good for level designing skills. And also we will talk about pixel art and tools for beginners. So yeah, if that sounds okay to you, let's dive in. First thing first, we need a game engine. So बहुत सारे game engine है market में and हम use करेंगे real stuffs, not some unreal stuff. So we will download Unity game engine. You can just type download Unity Hub on your browser or if you're feeling lazy to do that, आप description में जो link है वो click कर सकते हैं. हम डाउनलोड करेंगे यूनिटी हब। यूनिटी हब बेसिकली एक मैनेजमेंट टूल है जिससे आप यूनिटी वर्जन्स एंड प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। सो एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर आप 100K यानी कि 70 लाख से कम कमाते हो एक साल में एंड यूनिटी प्रो यूज़ नहीं करते तो आप डाउनलोड कर सकते हो ये यूनिटी पर्सनल। सो इन माई केस आई डोंट यूज़ यूनिटी प्रो एंड आई अर्न लेस देन माई ब्रदर and he is a berozgar. So yeah, I am absolutely able to download. After download, install it. To install it, you need to run it. Agree the terms and conditions. Choose the path where you want to install it. I am okay with the default, so मैं install click कर रहा हूँ. After you open Unity Hub, you will see something similar to this. आपका Unity Hub blank होगा because ये गेम्स है जिसमें मैं काम कर रहा था, तो गेम बनाने के लिए पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा. After signing in to Unity, now we have to install the Unity engine. So click on installs, फिर add. तो फर्स्ट स्टेप है कि आप Unity का वर्जन चूज कीजिए. अभी मेरे पास दो वर्जन्स हैं. Normally the newer the version is, the better the functions are. Now you might think why are they providing all these versions? ये इसलिए है क्योंकि जो गेम्स ओल्डर यूनिटी में डेवलप हो रहे थे वो नए वर्जन ऑफ यूनिटी में डायरेक्टली स्विच करे तो प्रॉब्लम आ सकता है. सो देयर आर वर्जन्स. सो इधर एक 2020 वर्जन है एंड एक 2019 वर्जन है. हम चूज करेंगे 2019 बिकॉज ये एक LTS वर्जन है. जनरली ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं. So click on 2019 LTS version, then click on next. Now ये दूसरा part है, choose the modules. We will skip this step for now. We can add modules later. So I click on next. Now it will start downloading Unity. It will take some time to download and install. The download size should be less than 2 gigs for this version. After the version is installed, we can add modules. So click on this 3 dot thing. अब क्लिक कीजिए add modules में. Microsoft Visual Studio आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा to write and edit your codes. There are other options but I recommend this one for now. Documentation भी बहुत helpful है, so add that one too. And later in this series, we will add some more modules. To add the selected modules, click on done. It will start downloading the modules. And yeah, this is how you download Unity engine and add modules. That's it for this video. On the next video, we will start developing the game. And if you face any problem, comment down below. Thanks for watching the video. Bye bye.